Hi everyone. So welcome to my channel again. Welcome back. So today I have an amazing topic for all of you guys. बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि किस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी सबको रिप्लाई नहीं कर पाया उसके लिए, एंड सेकेंडली उसी रीज़न की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ. ओके, सो आई हैव अ वेरी गुड कॉइन टुडे that we are going to discuss about, which is XRP. Okay, Ripple. So this is also a cryptocurrency जो अभी कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, और इस पे अभी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी. अभी इस पे ऐसी एक सूट भी हुआ था SEC का, बट दैट सूट इज़ ओवर एंड XRP इज़ राइट नाउ इन अ बुलिश मोड. सो आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So as you can see, it is up by 3.1%. Okay, and we are looking at the daily chart. ये daily chart है. Okay, so daily chart का मतलब क्या होता है actually? Daily chart का मतलब simple सा ये होता है कि you can see these candles, right? Green candle, red candle, right? तो ये जो एक कैंडल है, it represents one day. Okay, अगर मैं यहाँ पर 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ तो ये जो एक कैंडल है ये 1 आवर रिप्रेजेंट करती है. ऑलराइट, सो दिस मीन्स दिस दिस इज अ डेली चार्ट एंड दैट वाज अ आवरली चार्ट. सो राइट नाउ वी आर इन अ डेली चार्ट. ओके, डेली चार्ट ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं लोग क्योंकि जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो आई गेस यूज़ नहीं करते हैं. एंड दिस इज आर सर. सो what is the main topic? The main topic is here. As you can see, these are my positions. Please ignore these red candle red lines. So right now, if you can see, there is a very good resistance over here. Sorry, support over here. Right. यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट है अभी. ओके, एट द पॉइंट ऑफ 1.433 बहुत अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे अभी मार्केट से है एक्चुअली में. थोड़ा सा इसको यहाँ कर देते हैं. ग्रेट. तो अभी आप देख रहे हो ये काफ़ी बार यहाँ पर भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस था. ओके, और जब मार्केट नीचे गया था ऊपर आया था तो यहाँ पर भी थोड़ा रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर 1 2 3 जगह ऐसी थी जहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिला था इसी पॉइंट से. ठीक है, तो लाइक दिस वन एंड दिस वन विच इज़ राइट नाउ, दिस वन एंड दिस वन. So as you can see, these are all the points of resistance and support which is showing that maybe the market will go up from this point. These are like this one, and currently it is this one. All right, so as you can see, this is a very good resistance point. And one more thing which I wanted to show you, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ. अगर हम फेब रिट्रेसमेंट लगाते हैं, ओके, so if you are taking a Feb retracement, so as you can see, this resistance line is also the retracement level of 0.382, which is also very good retracement level. Okay, but the best one is 0.15, 0.5, and you can see this one. Okay, this is something interesting. This is something I wanted to show you guys. Can you see this wick? ये एग्जैक्टली हिट करी है कहाँ पर, जहाँ पर 0.5 का लेवल था और वहाँ से रिट्रेस हुआ. सो दैट मीन्स, जैसे कि मैं बोलता हूँ बाय द डिप्स, जिसने भी इस पोजीशन पे बाय किया होगा, सो ही और शी विल बी अप नाउ बाय 19% इन दिस बेरिश मार्केट ऑल्सो. मतलब अभी मार्केट डाउन है, इन दैट मार्केट ऑल्सो वो 19% अप होगा. राइट नाउ, what is the entry point? Right, this is the question. What is the entry point in XRP? So in XRP, according to me, guys, this is just a suggestion. Okay, this is totally up to you, and I'm not recommending anything to you. I'm just suggesting you, okay, according to my experience. So I think anyone who wanted to enter in XRP
can enter at this position. Okay, so this is your rectangle where you can take the entries. अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो मुझे नहीं लगता वो मार्केट 1.097 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 0.88 को क्रॉस करेगा. ओके, स्टिल देन डिपेंड करता है वो तो. बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी एंटर करने की मार्केट में, बिकॉज इट प्रॉबेबली मे गो very up from this point. You can see the changes. It might go up till here and it might take a reversal, as you can see, till here, but eventually for the long term it will go up. You will see some retracement. आपको थोड़े से retracement देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये retrace करेगा मार्केट, but eventually it will go up. Okay, and what is the target? So for long term guys, the target is I don't think so the market is gonna stop before $10. Okay, this is what I think. So $10, I think the market will go up, and it will take some time. I think till December the market will go up till $10. So you can put your stop loss, sorry, your take profits at around $6. Put your stop loss, sorry, take profit at $6 for 25%, and then $8 at 25%. So like that. Okay, so gradually you will be making some profit. So that is all I guess for today. And प्लीज़ आप लोग भी खुद थोड़ा सा रिसर्च की करिए इन सब चीज़ों के बारे में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. राइट नाउ क्रिप्टो करेंसी is on third stage, okay, in India, and it is just started in India. So this is a very good time to invest and enter in the market. क्योंकि अगर आप देखो स्टॉक मार्केट को, स्टॉक मार्केट बहुत पुराना है, राइट. यहाँ पर लोग बाग जो हैं उन लोगों ने काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं, मार्केट स्टेबल हो चुका है. पीपल नो कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, राइट. तो सॉरी, तो आप किसी ऐसी चीज़ में एंटर करिए ना जहाँ पर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं. एंड बिलीव मी, इन क्रिप्टो करेंसी you will see. Okay, if I talk about Bitcoin in 2015, the Bitcoin price was around $7,000, right. And let me show you. Okay, I'll show you, because I don't want to make any mistakes in this. So Bitcoin chart yearly. Okay, so let's see. So we can see yearly chart over here, right. You can see yearly chart over there. So if you want to see this is 2020, see the chart for, yeah, now you can see. So as you can see, in 2016 the price of Bitcoin was $416, and if you go in 2015 the price was $394, $394, okay, which is around 30,000 I guess. Okay, my maths is not very good, so I'm sorry, but it is around 35,000. And from 2015, this is 2021, right now the price you can see is 57,000, sorry, $57,000 and 107, 57, whatever it is, यार आप समझ गए. $57,107, $57,000 it is. So the growth is amazing. Okay, if you are looking to come into the cryptocurrencies, this is a very good time, because for long term it is going to give you amazing results. And same thing is with XRP, because अगर ये जो SEC का सूट नहीं हुआ होता XRP पे, तो it is a sleeping giant, believe me guys. It is like Ethereum and Bitcoin, because the technology behind XRP is amazing. Okay, and people are going to use it. There are some news about PayPal using
for transaction. PayPal is going to use Ripple for transaction purposes. So if that happens, it is the market is going to go up, right? So stay tuned, guys. If I have anything new for you, I'll definitely share it with you. And finally, I will wrap up this video by saying please like this video, and if you have any suggestions, let me know in the comment box. And so please subscribe for more videos like this. If you like my content, please press that bell icon so that whenever I post my video, you get the notification. All right, and please be safe because this is a very bad time, I would say. So please be safe. Okay, take care of yourself, take care of your families. If you need any help, you can always reach out to me. I'm always here. All right. So, and lastly, if you want to invest in these cryptocurrencies and you don't know through which platform you want, so I'll drop the link of WazirX in the description, so you can sign up from that link. It is very simple platform. You just have to follow some simple steps, and you can deposit through UPI also. That is a very good option right now. All right, so I'll share that link in the description also, and if you want to follow me on Instagram, I'll drop that link also. And that's all. Thank you, guys. Be safe. Peace out.